Hello everyone, today we will be starting a new chapter, partial differentiation. It's very important chapter of engineering maths, and almost it carries 10 marks in throughout all universities. So it becomes very important to understand all the concept very clearly. So let's start with it. So first of all, what are all the topics which we'll be learning here? What is the definition, different terms which are involved in partial differentiation. Then Euler's theorem for homogeneous equation, which will be in 2 variables, 3 variables. Then after that we will be looking for, that's a new topic will be total differentiation. And after that we will be seeing change of variables. These are all the topics which we will be learning in this partial differentiation. So let's start with it. First of all, it becomes very important for us to understand what's partial differentiation and what's its application before we start with actual concept which we'll be looking here. So far we have seen, अब तक तो हमने 12th तक पढ़ा था कि रेगुलर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की क्या ज़रूरत है, why we are using this and what is the difference between the regular differentiation and partial differentiation में क्या डिफरेंस होता है और इसका रियल लाइफ टाइम एप्लीकेशन क्या है. ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम वी विल फोकस ऑन दैट बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्चुअल कंसेप्ट. सो रेगुलर डिफरेंशिएशन जो हम 12th तक करते थे उसमें 2 वेरिएबल्स होते थे x एंड y. सो y यूज्ड टू बी ऑलवेज लाइक अ डिपेंडेंट ऑन द x वैल्यू, मतलब x की वैल्यू चेंज होती है, y की वैल्यू चेंज होने वाली है. तो दैट टाइम यूज्ड टू यूज़ रेगुलर डिफरेंशिएशन. लेकिन अगर होता है, अगर जहाँ पर अगर इक्वेशंस है जिसमें बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट विद ईच अदर और मोर देन 2 वेरिएबल्स आर देयर, दोज आर independent, so we cannot use that regular differentiation. तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम partial differentiation यूज़ करते हैं. I will take one example which will make it clear कि independent variable क्या होते हैं. तो मैंने यहाँ पे जो लिया है ये that's the volume of the cylinder. हमें ये तो पता है कि volume of cylinder हम कैसे करते थे. The formula which we use it is pi r square h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो यहाँ पे अगर क्लियरली आपको पता चलता है कि r जो रेडियस है और h जो हाइट है, ये दोनों वेरिएबल्स है और 2 वेरिएबल्स है और दे आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर मैं r की वैल्यू चेंज करती हूँ तो हाइट विल नॉट बी अफेक्टेड, हाइट के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला. अगर मैं हाइट चेंज करती हूँ, उसमें चेंजेस आते हैं, तो रेडियस के ऊपर उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है. सो यहाँ पे मैंने सेकंड जो डायग्राम यहाँ पे बनाई है, इसमें मैंने चेंज किया है रेडियस की, सिलेंडर का रेडियस चेंज किया हुआ है, जहाँ की हाइट वैसे ही है जैसे पहले थी यहाँ पे ओरिजिनल हाइट के अकॉर्डिंग टू. तो इफ़ आई वांट टू नो द चेंज, ऑब्वियसली अगर मैं रेडियस चेंज करती हूँ तो वॉल्यूम चेंज होने वाला है. So if I want to know the change in volume with respect to change in radius, तो मुझे partial differentiation करना पड़ेगा यहाँ पे. तो how I will represent it is by this symbol del v upon del r. That's how I will be finding it here. In this third diagram, what I have shown here कि यहाँ पे मैंने radius को constant रखा हुआ है, जहाँ पर height को मैंने change किया है. So again the volume of the cylinder will be gonna affected. So if I want to see the change in volume of cylinder with respect to change in the height, so this is again I will be using partial differentiation and I will be differentiating v is nothing but volume of the cylinder with respect to h, and this is how I'm gonna represent it. So that's how we are going to use partial differentiation when there are more than 2 variables, independent variables are involved. तो हमें ये कहाँ यूज़ होता है, मतलब रियल लाइफ टाइम में ये कहाँ इक्वेशंस आते हैं, जैसे कि इक्वेशन सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग और फिजिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस जो होते हैं. यहाँ पे इक्वेशंस, हीट इक्वेशन ऑफ वेव्स जो पढ़े जाते हैं, वी हैव टू स्टडी. इन दोज केसेस वी हैव टू यूज़ this one partial differentiation to solve those equations. So it's very important
So now the next point is how we note it or denote it. What's the notation we use it? So in regular differentiation जो हम करते थे regular, that we use D as a notation. यहाँ पे हम use करेंगे del, जो कि इस तरह से है कुछ, we call it as a del. And the next point is this one is variable. Means how we treat the variables in differentiation and partial differentiation. It's very important point because that's a big difference how we will be solving the questions. This one we know it very well. I will just revise it again. So we are finding the differentiation, रेगुलर डिफरेंशिएशन जो हम करते थे 12 तक एक्स वाई का लिया है. तो चेन रूल हमें तो पता है कि ये फर्स्ट फंक्शन हम ऐसे ही रखते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंस दिस सेकेंड विल बी एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. सो चेन रूल जो हमने पढ़ा है वो चेन रूल हम यहाँ पे भी वही यूज़ करने वाले, उस पर कुछ चेंज नहीं होने वाला है. ओनली थिंग इज हाउ वी ट्रीट द वेरिएबल्स, दैट्स द difference it is. So here this is how we chain rule we applied and this is what we got as a result. लेकिन partial differentiation में difference जो है बहुत important different है. When we are differentiating with one variable, other variable we keep it as a constant, and that's the reason we call it as a partial, because the variable with respect to which we are differentiating, other than that whatever independent variable are there, we keep them as a constant. So partially we treat them, so that's the reason the name is partial differentiation. So here I am doing the same. I am partially differentiating this xy. So here x, first of all x will be only the variable, y will be, now this will be coming as a constant, and this will be I will be taking as a variable. So if I will take this as it is, first function I will take it as it is, because chain rule, as per the chain rule we will be doing is then differentiation of y will be 0 because it's a constant. So constant का differentiation 0 होता है, plus second function will be as it is here, and differentiation of first function which is del upon del x of x का differentiation हो जाएगा 1, और ये आ गया यहाँ पे सिर्फ y जो यहाँ पे वो आ जाएगा. So if you see the result, it's a different, it's not same. Like with regular differentiation we will get this answer, but with partial differentiation we will get this one. So that's the major difference how we treat the variables, because they are independent with each other. So that's the important point. Let's take a small break over here. Meantime, you can revise the concept. In the next video, we will be discussing this more in detail.